physio in this city, or she is the best physio in this city. And this is the fame you have got without spending a rupee. My dear friends, I'm very honestly speaking, and on a dull note I'm speaking, to get patients, some of our physiotherapists are paying commission to the medical professionals. When you have a quality, when you have the skills, when you have the techniques, and you have the infrastructure, and when your name reaches to the medical professionals, to the annals of medical profession, no need to give any sort of cuts. You will be surely treated as the best physio, and you will be respected. Nowadays time has come, physiotherapy or physiotherapists are always a core member of the rehabilitation team. You might have heard about the word rehabilitation team. Those who are studying, those who are physiotherapists, they are much senior to me, they are practicing rehabilitation concept. What I'm trying to say is, फिजियोथेरेपिस्ट की अपनी स्किल्स और अपना फेम इतना होना चाहिए कि जब फिजियोथेरेपी का काम पड़े किसी एरिया में जहां आप रहते हो, सबके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए कि वो ही फिजियोथेरेपिस्ट है जो इस कंडीशन को बेस्ट ट्रीट कर सकता है. A very good example which I have seen, there was a patient in our hospital who was going to be operated for tendon transfer. Now before tendon transfer, there is mandatory to go for MMT, manual muscle testing of the particular muscles. MMT was done for the patient, and then a team of orthopedicians called up the doctor who did MMT, the physiotherapist who did MMT. They had a round table meeting with the physiotherapist, and they discussed with him saying, sir, आपने जो ये मसल टेस्टिंग की है, अगर हम टेंडन ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद ग्रेड कितनी कम हो जाएगी, कौन सी मसल में ग्रेड कितनी अच्छी है, और आपने पेरोनियस, लॉन्गस, ब्रेविस और टर्शियस को अलग अलग कैसे एमएमटी किया, हमें तो पता भी नहीं है, हमें बताइए. नाउ लुक एट द क्वालिटी ऑफ दैट फिजियोथेरेपिस्ट व्हेन अ टीम ऑफ ऑर्थोपेडिशियंस आर सेइंग हिम एंड एड्रेसिंग हिम, सर यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू हैव आइसोलेटेड द मसल्स एंड हाउ यू हैव डन द एमएमटी, एंड वी आर प्रीटी श्योर कि हम जो भी सर्जरी करेंगे फिजियोथेरेपी उनकी आप ही करेंगे. Now see the aura of that physiotherapist and see the confidence which the team of orthopedicians and the patient is having. और जब हम अपनी skills ऐसी develop कर लेते हैं, I'm not saying about any competition, जब हम खुद को improve कर लेते हैं, तो जरूरत ही नहीं किसी और चीज की. And what I'm taking the topic today is essential skills. हम लोग जो daily सीखते हैं, those are clinical skills. All the techniques, all the academics, वो बहुत important है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ वही है. हमें पता होना चाहिए कि essential skills क्या होती हैं, by how we have to develop our essential